People don't know their rights. They're so naive that when they go to the shop and even expired thing is given to them or something is overcharged, and the airline tells them or the confirm says that no, you don't have a reservation, or when you go to the bank and during the tenure of term deposit, they're changing rate, they're increasing rate, they're decreasing rate without knowing that this is for a period of say about 6 months or 1 year. In between they can't change it. But since the consumer, the customer do not know about their rights, most of the time they act very naive और मिस्कीन बन के वापस आ जाते हैं. So I think the rights, unless you know about your rights, you cannot fight. And there you're already doing, I don't want to be ungrateful, you're already doing an excellent job, but much more awareness to be created at the school level. Because this is not a short mission, it's a long mission, it's a long journey. So started from school level or college level, whereby when these people will have their families, they can tell their kids, and those new generation are there to fight for their rights through your platform. So these are the three things. When I was sitting here, I was just thinking, rather than giving a stereo speech, I must come up with something which is boggling my mind and which is need to be done to make it more effective and to have the recourse, the right recourse. Now, since I have a banking background and I'm also representing Federation of Pakistan Chamber of Commerce as Chairman of Banking, Credit and Finance for the last 14-15 years at State Bank. And since it is related to banking and financial services, so I'll just touch few points. Financial literacy is lacking. They even don't know what is financial literacy. They may be very educated people. They've done masters, or even more. But the financial literacy is a very specialized field which is lacking in our people. So we should know, as a customer of a bank, what are our rights and obligations. There's a high markup spread, the bank is charging 6 to 7% spread. Munir bhai, there is nowhere in the world the banks are supposed to charge this high spread between the deposit and the lending rate. But in Pakistan, it's being charged. And the spread is as high as 6 or 7%, which is resulting higher lending rates. So they pay very little on deposit, but they charge very high on advances. This is a matter of serious concern. There are numerous multiple charges on saving account and small account holders. Like I said, they change the markup rate on deposit during the tenure of deposit even. Credit card is a glaring example of ripping off the card holders through various charges and markup up to 25-26%. And sometimes when it's a penal, then it goes 30-35%. 40%. So 40%. Now why no voice has been raised on this issue? Credit card is a facilitation to a card holder, the plastic money to use as and when required. And it can never be a source of revenue generation for the issuer. So this is the important thing, Kauka. For credit card, since today is the financial services banking, to me, I think this is one of the very important points to be touched upon and to look at and include in your reports and to analyze and hire some expert. We have Jakarta Saab and other people, senior banker, to involve them and then take up the issues with the bank. A lot of consumers will be very happy because they're suffering. There are good things also like e-payments, mobile banking, branchless banking, growth of Islamic banking, which also to be acknowledged with great appreciation by the financial sector of Pakistan. Bank has a very negative trend to invest their funds in treasury bills rather than investing in project financing. They feel it very comfortable and very happy to place their funds in treasury bills at 13% rather than to lend for a project.
by private sector. And this is very negative trend because it is hampering the industrial growth. The banks are there for industrial growth or to contribute for the industrial growth. Or you see the banks are making profit for 14 billion and 20 billion and 22 billion, even in this crisis, because their focus has been changed. It is a totally commercial approach. Yes, why not? They are private banks, so commercial approach should be there. But they have certain national obligation for the industrial growth of the country, for the project financing, which has not been done. So this is also an issue, like a high spread markup, which is need to be taken up. I think CAB should have an advisory committee to address banking related issues of the consumer. You form a committee and let you have, mashallah, good member having a rich banking experience, and then the people should approach you for banking related issues. Like you have formed a committee for power, KC issues. So have some specific focal committees, and whenever there is a complaint, you just divert to them, and those experts know how to take up your issues to protect their interest. Now, in G20 high-level financial consumer production meeting, there was some principle agreed for legal and regulatory supervisory framework. State Bank is a regulator in Pakistan. Unfortunately, it's not discharging its duties. Banks are free in their own way to charge as high as they can, not abiding the principles of banking. And I think the regulators should play their due role, which is State Bank of Pakistan. The other principle was equitable and fair treatment of consumer. But we see a very significant disparity and very differential treatment between the customers, according to the size of the customer or the deposit the customer is keeping, whereas the principle agreed it is to be equitable and fair treatment for the customers, banking customers. Disclosure and transparency, this is a very, very important point. When we talk banking, I'm an ex-banker, very first thing relates to bank or banker is secrecy. Banking secrecy. Are our banker abiding the basic rule? No, not. They are sharing all sorts of information from revenue agencies, from different sources, without abiding to the banking secrecy rule. I think Consumer Protection Council should take up this issue through Motasib, that Banking Secrecy Act should be truly implemented. This is the basic principle of banking. Then, please, you force State Bank to publish credit rating of the banks. Gaurav sir, why people are losing their money? Because there is no credit rating of the banks. People go for higher deposit rate and they lose their own money. There is investment bank. Even my Federation Partner Chamber of Commerce lost crore of rupees, the funds placed with investment bank, and today not a penny to be refunded. And this is only because there is no credit rating. And State Bank should publish the audit reports of the banks. It should make public. If any bank, the equity ratio or NPL, non-performing loans ratio has gone very high, it must be highlighted in the report. So people should be aware before placing their punji, whether the institution is safe enough to refund their money on due time. So I think this is also very, very important. Yes, seminar to be conducted for some concessional financing and facility, the export, refinance, and all. People don't know. Small investors, when they start some business, they don't know which are the facilities of the banks they can avail to promote their exports.
And even banks should have their own centralized complaint center where people should complain, like you have in airlines, like you have in other departments. Why not in banks? And finally, I think banks should display their charges. They're hidden charges and there are multiple charges. And there are some forms which a customer signs while opening, and in that form the customer is agreeing to all sort of charges and variance and escalation and losing all their right to protest. I think you should see those forms with some legal people whereby a customer while opening account should not lose their right. And at some time, if they find out irregularities, they've been overcharged, they've been ripped off, can take up the matter through Motasib. Otherwise they'll say, ये तो sign खराब था भाई, ये तो agree है, हमें right दिया. So I'm sorry taking enough of time, but today I don't want it to be in studio speech, but rather I will talk from my heart. Certain issues based on my banking experience and being in Federation, handling this banking credit finance for over 13-14 years, and these are the issues that are coming to me. I'm also heading a committee called Credit Advisory Committee in State Bank of Pakistan, where all banking issues are referred to Federation. We take up in the State Bank the respective representative of the banks, and is showing fruitful results. So I'm very thankful to Kokam for inviting me and share my very candid views and thoughts with the August gathering. And Munir Bhai has been always inspiring force for all of us. When he is there, we feel like he's speaking. Thank you very much. डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने बड़ी ही अच्छी तकरीर की. मेरे ख्याल से जो बातें आपने बताई फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में, और जो आपने ख़ास तौर पे बातें आगाही के लिए की कि ये बड़ा ज़रूरी है कि बैंक्स को अपने चार्जेस को, ख़ास तौर पे जो खुफिया चार्जेस, जैसे आपने कहा हिडन चार्जेस जो होते हैं, वो भी लोगों को बताने चाहिए. इसकी इम्पैक्ट तशरीफ लाएँ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जो कि मैं कह सकता हूँ कि माहिर माशियात हैं, और मुझे इत्तेफाक रहा इनके साथ कुछ मुकालमे करने का. तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जितना ये अवाम के मसाइल को जानते हैं और इस्तेसाली निज़ाम को पहचानते हैं, उतना बहुत कम लोग पहचानते हों. जनाब फारूक हसन साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कमर्शियल एंड रिटेल बैंकिंग नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के, ये ना सिर्फ के एक मारूफ बैंकर हैं, बल्कि मीडिया पर भी इनको आपने काफ़ी मरतबा देखा होगा. ये मैं ये कह सकता हूँ कि मीडिया की भी एक बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है और बैंकिंग फील्ड की भी एक बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है. और इनका जो आप कह सकते हैं एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है कमर्शियल एंड रिटेल बैंकिंग, यहीं से ज़्यादा शिकायत आती हैं. तो मैं कोशिश करूँगा कि ये इनसे गुजारिश करूँगा कि ये भी तशरीफ लाएँ और बात करें इस बारे में. और हम खुसूसी तौर पे आपके शुक्रगुजार भी हैं, आपके बैंक के सदर के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने स्पॉन्सर किया है इस इवेंट को. तो जनाब फारूक हसन साहब तशरीफ लाइए, आप लोग भी तालीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात. कादर साहब, चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान, डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब, मुनीर साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, डॉक्टर साहब, honorable ladies and gentlemen, it's a real honor for me. I'm thankful to Kaukab Sahab for inviting me and letting me speak to this August forum. मुझे जब काउकब साहब की इनविटेशन आई और जब इनसे बात हुई, तो मेरे लिए इस वक्त सबसे बड़ा जो एक्साइटमेंट थी वो ये थी कि अभी आए नहीं हमारे डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब. मैं उनका स्टूडेंट भी रह चुका हूँ IBA में, और मैंने उससे बहुत सीखा है. तो मैंने कहा मेरे लिए बड़ा ऑनर होगा कि अगर मैं इस फोरम में जाऊँ. बहरहाल ला रहे हैं डॉक्टर इख्तियार बेग साहब का मैं सुन रहा था अभी उनकी बातें, और मुझे उस तमाम बातों में एक ट्रू बैंकर की खुशबू आई. He was not speaking as the chairman of the task force and all. He was speaking like a true banker. अच्छा जी, मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपसे, और कोई लेक्चर या उस तरह का सेशन नहीं है. मैं कंज्यूमर फाइनेंसिंग पे बात करना चाहूँगा.
I have been in banking for about 16 years now. I've had the honor to serve with a multinational bank. Now I'm serving with National Bank of Pakistan. I have been in consumer financing for about 8 years, or I have been honored that I was an international staff. I've served in different countries as general manager for consumer assets. Consumer financing is a concept जिसने पिछले 15 साल में पाकिस्तान में बड़ी धूम मचाई और हर तरफ कंज्यूमर फाइनेंसिंग आपको नजर आई। इसके अच्छे पॉइंट्स भी हैं और इसके खराब पॉइंट्स भी हैं। ओवरऑल अगर मैं ग्लोबली देखूं, कंज्यूमर फाइनेंसिंग के जो इश्यूज हैं रिलेटेड टू कंज्यूमर वो मोर और लेस सिमिलर हैं, सेम जेनेरिक नेचर के हैं। कंज्यूमर फाइनेंसिंग क्या है? कंज्यूमर फाइनेंसिंग बेसिकली वो तमाम फाइनेंसिंग है जो इंडिविजुअल लेवल पे हम सब अवेल करते हैं। It could be in the form of credit cards, it could be in the form of personal loans, it could be in the form of auto loans, and it could be in the form of mortgage loans, like house loans. ये तमाम consumer financing में आते हैं। Consumer financing generally जो है risky investment होती है from a bank's perspective, क्योंकि ये collateralize नहीं होती, ये individual पे exposure लिया जाता है और except for house loans and sometimes auto loans, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन जनरली क्लीन लोन्स होते हैं, इनको क्लीन लोन्स कहा जाता है। इसका बेसिकली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पहले नहीं था। नेशनल बैंक के हवाले से मैं बात करूंगा, अभी कंज्यूमर फाइनेंसिंग में नहीं है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट सिविंग, आई एम टॉकिंग अबाउट एन एक्सपर्ट जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग बाकी मुल्कों की भी देख चुका है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्टेट बैंक ने प्रूडेंशियल रेगुलेशंस के हवाले से पूरे पाकिस्तान में हम सबको पता है, जिससे बैंक्स गवर्न होते हैं, लेकिन वो जनरली मैक्रो फाइनेंसिंग के हवाले से हैं प्रूडेंशियल रेगुलेशंस। 2004 1 जनवरी को स्टेट बैंक डीम्ड इट फीजिबल कि इट्स अबाउट टाइम के कंज्यूमर फाइनेंसिंग के हवाले से भी जो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस हैं वो होनी चाहिए। सबसे बड़ी गाइडलाइन उस हवाले से वो थी कि कंज्यूमर के राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। जो कस्टमर कंप्लेंट्स हैं उनकी रिड्रेसल क्या है, क्या बैंक्स आर दे टेकिंग इनफ स्टेप्स टू रिड्रेस द कंप्लेंट्स, क्योंकि कंज्यूमर लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो यकीनन कंप्लेंट्स ज्यादा आती हैं एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट सेक्टर। तो इस हवाले से स्टेट बैंक ने कुछ रेगुलेशन इशू की कि एक तो ये थी कि जी सीनियर ऑफिसर होना चाहिए जो भी कंप्लेंट्स डील करेगा, एक मल्टी टियर कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए हर बैंक में, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में टू डील विद सच कंप्लेंट्स विद रेफरेंस टू कंज्यूमर फाइनेंसिंग। उसमें 4 स्टेप्स थे कि जब भी कोई कंज्यूमर जाएगा, कोई भी इंडिविजुअल होगा जिससे कंप्लेंट है, उसकी पहले कंप्लेंट एक्नॉलेज की जाएगी, फिर उसको एड्रेस किया जाएगा, उसको हैंडल किया जाएगा और फाइनली इन्वेस्टिगेट करके उसका फीडबैक दिया जाएगा। बहुत से बैंक्स ने इसे फॉलो भी किया, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि इतना ह्यूज एस्पेक्ट है, इतना बड़ा सेक्टर है कि अगर आप कहेंगे कि 100% कंप्लेंट रेजोल्यूशन तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी बैंक बोस्ट कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली विद पैसेज ऑफ टाइम, विद कंपटीशन, बैंक्स also decided to upscale their customer complaint units, complaint resolution units. स्टेट बैंक ने इसके अलावा हमारे बैंकिंग के ओम्बड्समैन हैं, अगर आपकी बैंक आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं करता तो आप ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं, उनको कंप्लेंट कर सकते हैं। और उसके बाद एक और टियर भी जो है वो स्टेट बैंक ने जो है वो फॉर्म कर दिया, वो प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, जहाँ पे अगर आपको ओम्बड्समैन के फैसले पे इतराज है बैंक को या इवन कंज्यूमर को, तो आप उसमें भी जा सकते हैं, सीपीडी से कहा जाता है। अब मैं सिर्फ 4 पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा जो जेनेरिकली थ्रू द वर्ल्ड कंज्यूमर्स फेस करते हैं कंज्यूमर फाइनेंसिंग के हवाले से। एक तो ये कि इंटरेस्ट रेट, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि 40% भी है, अप टू 40% भी है। अगर आप क्रेडिट कार्ड्स का लें तो जनरली इट रेंजेस बिटवीन 28 to 40%। अगर आप हाउस लोन का लें या ऑटो लोन का लें तो इट रेंजेस एनीवेयर बिटवीन 16 to 22%। इसको कम होना चाहिए ऑब्वियसली फॉर द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर, फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल्स। और ऐसे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको रिसेंट एग्जांपल कोट कर रहा हूँ कतर का, वहाँ भी मैंने सर्व किया हुआ है। वहाँ पे जो कतर का सेंट्रल बैंक है उसने एक सीलिंग फॉर्म कर दी और 12% से ऊपर बैंक्स नहीं चार्ज कर सकते।
اب آپ کی مرضی آپ کنٹینیو کریں پروڈکٹ کے ساتھ نہ کریں, ڈیفینیٹلی پھر بھی بینک کے لیے بینیفیشیل ہی ہوگا کیونکہ وہاں پہ انٹرسٹ ریٹس جنرلی کم ہے, لیکن ایک سیلنگ انہوں نے فکس کر دی. پاکستان میں ایسا کوئی سیلنگ نہیں ہے, اٹ ویریز فرام بینک ٹو بینک, آپ جتنا مرضی چارج کر سکتے ہیں. اسٹیٹ بینک کی جو ریگولیشنز ہیں انہیں اسٹرکٹلی انفورس بینکس کو کرنا پڑے گا with specific reference to customer complaint resolution. بہت سی کمپلینٹس ایسی ہیں جو unresolved پڑی رہتی ہیں, اور یہ کریڈٹ کارڈ کا ڈاکٹر صاحب نے خاص طور پر ذکر کیا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کریڈٹ کارڈ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو ہم لوگ یوز بھی بڑے شوق سے کرتے ہیں, لیکن اس کی جو کمپلینٹ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں اس میں کوئی کمپلینٹ کوئی ایشو نہ آ جائے. اگر یہ چوری ہو جائے یا گم جائے یا کارڈ آپ کی اسٹرپ خراب ہو گئی, آپ کو ریپلیس کرانا ہے, اس کے لیے جو ہیسل سے گزرنا پڑتا ہے ہر ایک کو, چاہے آپ کسی کو جانتے ہو بینک میں یا نہ جانتے ہو. تو بیسیکلی وہ ایک اسموتھ پروسیس ہونا چاہیے, سب کے لیے ایک پروسیس ہونا چاہیے. انسولیسیٹڈ فائنینسنگ جو ہے اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. بینکس کی آپ نے اکثر دیکھا سیلس ٹیم سنڈے والے دن فون آتے ہیں دوپہر کو 2 بجے, آپ آرام کر رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ہاں جی آپ کے پاس, میں فلانے بینک سے بول رہا ہوں, کریڈٹ کارڈ ہے آپ کے پاس, یہاں پرسنل لون ہے, ہم لوگ ایشو کریں, ہم لوگ آپ کو یہ دے سکتے ہیں, ہم لوگ کو. اب آپ کو ضرورت ہے یا نہیں ہے, آپ obviously ٹیمپٹنگ آفر ہے, ایک چیز بیٹھے اٹھائے آپ کو مل رہی ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ obviously اگر وہ پروڈکٹ لے لیتے ہیں, کوالیفائی کرتے ہیں, اس سے آپ کے خرچے بھی بڑھتے ہیں, اس کے ملٹیپل ایک ویشیس سرکل ہے.